Hello everyone, warm welcome to Super Coaching by Testbook. I welcome you all on Regulatory Bodies YouTube channel and I request everyone do reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine so that we can begin the discussion. And today we will be discussing the finance current affairs. We know that finance current affairs are going to play a really very important role in your upcoming examination, whether you are preparing for RBI Grade B, SEBI Grade A, or any other finance, any other regulatory body or bank related exams. Finance current affairs are really very important. So in this particular session, we discuss the general finance current affairs, the current affairs related to the banking world, and most importantly, we discuss the RBI circulars, which include RBI notifications, RBI master circulars, RBI press release, and many more. So before we start the discussion, just give me yes sir in the comment section so that we can begin the discussion if everything is fine. Thank you so much for your reply, guys. Let's begin the discussion without any further delay. So first of all, obviously I was not available for last few days due to some unfortunate reasons, but it's okay. Now I'm available and I have started my discussion from the very same date where I left. So till 13th of February, we have already completed the finance current affairs, and today we are moving ahead and we will be discussing the current affairs based on 14th and 15th of February and related to the financial world. So let's begin the discussion, guys. Here we go with the first point. But before I start the discussion, I would like to inform everyone that you can download the PDF of this session, which will be available on the given Telegram channel. So you can just scan this QR code and you can download the PDF from this particular Telegram channel, and I can assure you this PDF is going to help you a lot in your upcoming sessions as well, in your upcoming examinations as well. Okay, so I guess all good. Everyone is live. Everyone is present. Chalo ji, let's begin the discussion. Here we go with the first news of the day. The first news is related to Small Industrial Development Bank of India. We all know that SIDBI is one of the all India financial institution which include NABARD, NABFID. Along with that, we have NHB and Exim Bank. So SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, was created with a sole aim to promote the industrial sector in the country, and specifically small industries at that point or at that time when it was set up. But currently SIDBI is focusing for the development of MSME sector, that is micro, small and medium enterprises. We know this very well that MSME is one of the important sector of the economy, because if I talk about the total GDP contribution as well as the export contribution of MSMEs is pretty large, which intend the government to increase its, I would say, target, to increase its interest, to increase its policies towards MSME sector so that it can develop at a high pace. Along with that, we are trying to become a developed nation by 2047, and that is going to be impossible without the day-to-day development, neck-to-neck development of the MSME sector. So in the same context, on the same lines, this initiative have been taken where Small Industrial Development Bank of India has signed an agreement with French Development Agency, which is based in Paris, France, and $100 million credit facility arrangement has been announced. So what is it? So it is very simple. SIDBI has signed an agreement with the AFD. This AFD, if I elaborate it, it's in French, as I have mentioned in the bracket as well. But if I talk in English, it will be French Development Agency. So French Development Agency has provided a credit line of $100 million, and this credit line of $100 million is accessible by SIDBI. SIDBI can access this credit line, and this credit amount will be used by SIDBI, and that amount will be lended to the MSMEs, or it will be circulated to the MSMEs with the target
of promoting what? So with the target of promoting green. The way I use the word green, that means environment friendly, renewable energy. So this is to enhance green finance solutions. Now the question is, so we have heard about green energy. We have heard about green banking. Now what is this green finance solution? Green finance solution basically means when the loan is provided in order to set up a project, which will boost the green energy development in the economy, that is known as green finance. So whenever borrowing is done, agar aap borrow kar rahe hain, you will be utilizing that amount in order to set up a solar system, in order to set up a solar panel, or in order to set up a windmill, then we will include this lending under the category of green finance. So remember that credit facility agreements to enhance green finance solutions for India's micro, small and medium enterprises. This is really very important. So conclusion is of the first particular paragraph is SIDBI, that is Small Industry Development Bank of India, has received a credit line of $100 million from which organization? That is French Development Agency, and this $100 million of credit finance will be utilized in order to promote, in order to distribute green finance solutions for the MSMEs of the country. This collaboration basically aims to support sustainable growth and facilitate the transition towards low carbon economy. What is low carbon economy? So low carbon economy means an economy where the emission of greenhouse gases is pretty low. So whenever a country decrease the greenhouse gas emission, decreases, that means the economy is moving towards low carbon economy, and we know that very well. India is aiming to become zero emission economy by net zero emission economy by 2070, and this initiative will help the economy to reach to the same targets. So if I talk about the important points, the first important point is AFD, that is, it stands for French Development Agency, will provide a credit line of $100 billion to Small Industrial Development Bank of India to deploy the funds to expand access to affordable financing, and this affordable financing will be provided to MSMEs, which will invest that borrowed amount in the energy efficient technologies, renewable energy solutions and climate friendly business practices. That means the amount which the MSMEs are going to borrow, they will be utilizing that amount. They will be utilizing that amount for the purpose of investing that in the energy efficient technologies, renewable energy solutions and climate friendly business practices. What is green finance? So this basically focuses on, if I talk about this collaboration, it focuses on green finance, which refers to the financing that supports projects or businesses working to reduce the environmental impact. So all the projects which are going to reduce the environmental impact, which are going to reduce the environment degradation, that are included under the category of green finance. I have already discussed what is low carbon economy. The economy with fewer greenhouse gas emission is known as low carbon economy, or the economy which relies more on the renewable energy is known as low carbon economy. As I already discussed, that India is going to achieve a target of net zero emission nation by 2070, and this initiative also complements the work on the Greening Indian Financial System platform. So this platform has been set up, which is promoting the financial sector of the country in order to provide loan or financial services to incentivize as well as to provide credit to the organizations, to the companies, to the industries, that they should invest that borrowed amount in the green energy sector, in the renewable energy sector. So that is all about this particular tie-up. I hope this tie-up is clear to you. If it is clear, just give me yes sir. I'll just quickly give you an overview. So the first point says SIDBI, French Development Agency, $100 million credit facility in order to enhance green finance solution for
MSMEs of the country. Next, what you need to remember, what is low carbon economy? A new term for you. You need to remember that. What is green finance? You need to understand this term. And most importantly, India is going to become net zero emission nation by 2070. So just remember the data, that is 2070. Is it clear, guys? Shall I move ahead? Just give me yes sir quickly in the comment section. I will be moving on to the next news. The next news is again really very important. So we'll talk about this next news. But before that, may I have a yes sir in the comment section if it is clear till this now. If it is clear till this point. अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, I would request you do hit the like button and we'll move on to the second news of the day. So the second news talks about foreign investment in small finance bank. Before I start my discussion, I hope you all are very well aware that in the Indian banking sector, foreign investment is allowed. But if I say FDI, so the FDI limit is up to 20% if we are talking about public sector bank, and it is up to 74% if I'm talking about private sector bank. So if it's a private sector bank, in case of private sector bank, up to 74% of FDI is allowed. I hope you all know this point. I hope you all understand this point. But if SBI I talk about, PNB I say, if I talk about Punjab and Sindh Bank, then FDI up to 20% is allowed. Now, what is the news? The news says recently RBI has approved Zulia Investments to increase stake in the AU Small Finance Bank. So, few important points, very important question with the keeping in mind phase 1. This news has a potential that it can be asked in the phase 1 examination. So ध्यान से देखना. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया किसे? जूलिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को, जो कि क्या है सर? वो एक सब्सिडरी है किसकी? सिंगापुर बेस्ड टेमसिक होल्डिंग्स लिमिटेड की. तो टेमासिक होल्डिंग्स लिमिटेड एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है. द नेम इज जूलिया इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट इन्वेस्टमेंट कंपनी will be investing in AU Small Finance Bank as per the permission given by RBI. तो ऐसा नहीं है कि this company is going to invest for the very first time. अब ये कहा जा रहा है कि आप अपने शेयर होल्डिंग्स को इंक्रीज कर लीजिए. करंट शेयर होल्डिंग या करंट शेयर होल्डिंग Zulia इन्वेस्टमेंट की is around 1.37% and they are going to increase it to 7%. तो आरबीआई ने कहा है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लेटर मिला आरबीआई से और उस लेटर में लिखा था कि आरबीआई ने जूलिया इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया कि दे कैन इन्वेस्ट और दे कैन एक्वायर अप टू 7% ऑफ द बैंक्स पेड अप कैपिटल या वोटिंग राइट्स विद इन 1 ईयर. तो फरवरी 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक 1 साल का समय दिया गया और इस 1 साल में जूलिया इन्वेस्टमेंट को अपने जो शेयर होल्डिंग है उसे इंक्रीज करना होगा टिल 7%. अगर जूलिया इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं करती तो आफ्टर 1 ईयर दिस परमिशन, दिस अप्रूवल विल लैप्स. फिर आपको दोबारा से आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा. अगर आरबीआई अप्रूव करेगा देन ओनली यू विल बी अलाउड टू एक्वायर दी शेयर होल्डिंग्स. करंटली अगर मैं बात करूं तो जूलिया इन्वेस्टमेंट के पास 1.37% स्टेक है किसके? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के. और अगर हम बात करें ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो टोटल शेयर होल्डिंग है दैट इज 39.35%. तो इसका भी आंसर सुन लीजिए. ये क्या है कि सर अगर हम ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें इन दिस पर्टिकुलर बैंक दैट इज 39.35%. उसमें से अगर हम जूलिया इन्वेस्टमेंट की बात करें दैट इज 1.37%, लेकिन इसे इंक्रीज किया जाएगा बाय 7% कब तक? फरवरी 2026 तक. और ऐसा करने के बाद जूलिया इन्वेस्टमेंट विल बिकम द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन दी जयपुर बेस्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे अप्रैल 2017 में, जो फोकस कर रहा है टू प्रोवाइड क्रेडिट to the retail customers as well as MSME while offering deposit and branch banking services. और अगर हम आज की बात करें, AU Bank is one of the highest interest paying bank in the country. If you talk about fixed deposit as well as for that matter savings account, AU Small Finance Bank is one of the highest deposit interest rate paying bank of the country. ठीक है जी. तो AU Small Finance Bank,
जूलिया इन्वेस्टर्स 1.37% to 7%। ये न्यूज याद रखिएगा, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। काफी दिनों बाद क्लास हो रही थी तो मैं नहीं चाहता था कि आई शुड कम अप विद वेरी हैवी न्यूज फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की कुछ हैवी न्यूज आ चुकी हैं व्हेन आई वाज नॉट अराउंड, व्हेन आई वाज नॉट प्रेजेंट। सो आई वांट दैट आई विल बी डिस्कसिंग that news once we both are in flow. We both means you and me, we both are in flow. So I'm taking this session almost at a gap of 1 week if I'm not wrong. So let's buckle up again, let's smoothen up again, and once everything is fine, that means from next class onwards on Saturday you are going to find very quality, very heavy news directly from RBI, latest circulars, RBI latest notifications which are going to be asked in your phase 2 examination, which can be asked in the phase 2 exam as well. So moving on to the next news, again I would say halki fulki news for you for phase 1. Sir, IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, which is the regulator of insurance company, has unveiled Bima Trinity scheme for insurance revolution. So few points which you need to remember from this particular news as well. Please pay attention. Sir, Insurance Regulatory and Development Authority of India ने ऑर्गेनाइज किया था 9th एडिशन, किसका 9th एडिशन? बीमा मंथन का। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर एक्चुअली व्हाट इज बीमा मंथन। बीमा मंथन इज व्हाट? सर बीमा मंथन इज अ क्वार्टरली मीटिंग विद इंश्योरेंस कंपनी सीईओज। तो जो हमारा IRDAI है, that is the Insurance Regulatory and Development Authority of India, it conducts a regular quarterly meeting. It conducts a regular meeting on quarterly basis with the CEOs of the insurance companies, and that meeting is known as Bima Manthan, जो कि हाल ही में फरवरी में 2025 में कंडक्ट की गई। इस मीटिंग के दौरान IRDAI ने इंट्रोड्यूस किया क्या? बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी क्या है सर? ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इंश्योरेंस सेक्टर की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ताकि इंश्योरेंस सर्विसेज कैन रीच टू द लास्ट मैन इन द लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है बीमा संगम, सबसे पहला कंपोनेंट है बीमा सुगम, दूसरा है बीमा विस्तार और तीसरा है बीमा वाहक। लेट्स टॉक अबाउट ऑल 3। सबसे पहले अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करूं उससे पहले एक पॉइंट आप याद रखिएगा, वो क्या? सर ये जो इनिशिएटिव लिया गया है रिगार्डिंग दी बीमा मंथन, रिगार्डिंग द बीमा ट्रिनिटी या रिगार्डिंग ऑल द इंश्योरेंस सर्विसेज, टारगेट एक ही है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। वी जनरली मिसलीड आवरसेल्व्स और हम ये सोचते हैं कि सर इंश्योरेंस का मतलब या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज है। दैट इज वेरी रॉन्ग। इंश्योरेंस सर्विसेज का मतलब बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, सॉरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है access to the financial services at affordable cost, access to the financial services at affordable cost, उसे हम क्या कहते हैं? we call it as insurance, we call it as financial inclusion, जिसमें banking services भी है और insurance services भी है, और उसी को टारगेट करते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है, that is Bima Trinity। और India is going to become a developed nation, and a nation cannot be developed until and unless we have a good access to the insurance services। पहला जो ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? 3। ट्रिनिटी वर्ड इज 3 में से पहला जो पॉइंट है दैट इज बीमा सुगम। बीमा सुगम है क्या? सर ये एक ओपन डिजिटल मार्केट प्लेस डिजाइन की गई है, एक ओपन डिजिटल मार्केट प्लेस डिजाइन की गई है टू फैसिलिटेट सेल, सर्विसिंग एंड क्लेम्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अक्रॉस वेरियस इंश्योरेंस कंपनी। तो जो वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए आप ये समझो कि डिजिटल मार्केट बना दी, जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज दे कैन कम टू सेल देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस कंपनीज दे कैन कम टू प्रोवाइड services against their insurance policies, and even the customers they can come and raise the request for insurance claim on a single marketplace that is known as Bima Sugam।
याद रखिएगा, ये जो बीमा सुगम है, इट इज बेसिकली बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, जिसे इस्टैब्लिश किया गया था। क्यों? क्योंकि सर एक फेडरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था जिसके तहत ट्राई ये की गई, कोशिश ये की गई कि आप डेवलप करो और ऑपरेट करो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि अलाउ करे इंश्योरेंस कंपनीज को एक मार्केट प्लेस पर अपनी सारी की सारी पॉलिसीज को सेल करने का, सर्विस करने का और क्लेम्स से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाए। तो उन्होंने ये जो बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन है उसने सेटअप किया, एस्टैब्लिश किया, डेवलप किया, ऑपरेट किया इस प्लेटफॉर्म को, और पहले फाउंडेशन प्रोसेस बनाया गया और अब ये जो पर्टिकुलर बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है ये रेडी है ऑपरेशनल होने के लिए। इट्स नाउ रेडी फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन एंड कैपिटलाइजेशन। उसी का अनाउंसमेंट किया गया, दैट इज बीमा सुगम। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दैट इज बीमा विस्तार। बीमा विस्तार क्या है? सो बीमा विस्तार इज बेसिकली अ पायनियरिंग कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट ऑफर्स कवरेज फॉर लाइफ, पर्सनल एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी एंड सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन। तो इन शॉर्ट क्या सर, बीमा विस्तार एक कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसे अनाउंस किया गया, जो लाइफ इंश्योरेंस भी देगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी देगा और उसके साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन यानी सर्जिकल इंश्योरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज बीइंग टर्म्ड एज व्हाट सर? इट इज टर्म्ड एज बीमा विस्तार। तीसरा जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया अंडर दिस ट्रिनिटी, दैट इज बीमा वाहक। अगर मैं बीमा वाहक की बात करूं, ये क्या है सर? इट इज अ लोकलाइज्ड विमेन सेंट्रिक, आई रिपीट, localized women centric insurance field sales force aimed at enhancing insurance penetration in the underserved areas. So Bima Vahak is scheduled for a soft launch in April 2025. तो बीमा वाहक क्या है सर? बीमा वाहक एक इंश्योरेंस एजेंट्स की सेल्स फोर्स बनाई गई है और इसे लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2025 में, और ये विमेन सेंट्रिक सेल्स फोर्स रहने वाली है विच विल रीच और विच विल बी गोइंग टू दी रूरल एरियाज, जहां पे विमेन जाकर एक्सप्लेन करेंगी फैमिलीज को about the benefits of insurance services so that the insurance facilities, insurance services can penetrate in the underserved rural areas as well with the help of this sales force. Is it clear everyone? Is it clear everyone? So remember तीन चीजें, बीमा सुगम, it's a open marketplace जो डिजाइन की गई है बाय बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, जहां पर सेल, सर्विस, क्लेम सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। दूसरा बीमा विस्तार, एक कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे दिया जिसमें लाइफ, एक्सीडेंटल, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सब एक में मिला दिया। और तीसरा है आपकी इंश्योरेंस सेल्स फोर्स जिसका नाम दिया गया बीमा वाहक। तो ये ट्रिनिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय IRDAI ड्यूरिंग द बीमा मंथन। एंड व्हाट इज बीमा मंथन सर? ये क्वार्टरली मीट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज मिलते हैं विद द IRDAI एंड इन दैट मीट वी कॉल दैट मीट एज बीमा मंथन। और ये 9th एडिशन था, फरवरी 2025 में इस बीमा मंथन का 9th एडिशन था जो कि ऑर्गेनाइज हुआ और उस एडिशन के अनुसार बीमा ट्रिनिटी को अनाउंस किया गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज सर, RBI ने अप्रूव किया क्या? इंपॉर्टेंट न्यूज है, 1 मार्कर क्वेश्चन, फेज 1 फॉर श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लेना, याद कर लेना। RBI ग्रेड बी हो, SBI हो, कोई भी एग्जाम हो जो आप आने वाले साल में देने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दैट इज RBI अप्रूव्स PD सिंह अपॉइंटमेंट एज CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर इंडिया। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इज अ फॉरेन बैंक एंड दिस बैंक इज ऑपरेटिंग इन इंडिया एज वेल। सो इस बैंक के इंडिया ऑपरेशंस के लिए जो CEO अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है सर? द न्यू CEO who has been appointed, his name is PD सिंह। तो स्टैंडर्ड चार्टर ऑफ इंडिया विच इज बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, new CEO has been appointed, the name is PD Singh, Prabdev Singh, and RBI has given the approval to this name. He is going to assume this position from 1st of April 2025 क्योंकि Zareen Daruwala is going to complete his tenure of 10 years after serving as the CEO
ऑन 31st ऑफ मार्च 2025। तो दो नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है। पहला नाम जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रभदेव सिंह, न्यू सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर ऑफ इंडिया, दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, इससे पहले कौन था हेड? सर इनसे पहले जरीन दारूवाला वाज द हेड, ही हैज सर्व्ड एज द सीईओ फॉर 10 years. But if I talk about the current name, that is PD Singh, he is appointed for next 3 years and the approval has been given by RBI and he will head India as well as South India operations of Standard Chartered Bank. मुझे comment section में बताइएगा where is the headquarter of Standard Chartered Bank. Do reply in the comment section please. Remember this, Standard Chartered Bank has been operating in India for almost 160 years now and it has a network of 100 branches which is spread in 42 cities of the country. Do not remember this data, it is just for your information. You can remember this, that what is the size of this particular bank as a foreign bank operating in the country. Last but not the least, we have is LIC, that is Life Insurance Corporation of India, the largest life insurance company of the country, government owned company, majority shareholder of IDBI, that is LIC. So Life Insurance Corporation of India has launched One Man Office. What is this One Man Office? So One Man Office is basically a digital service platform. What is it? So it is basically a digital service platform which is trying to empower its agents and sale associates by providing seamless policy sales, customer services, business tracking through a mobile phone. So what is this One Man Office? One Man Office का बड़ा सिंपल सा टर्म है सर, आपके घर एजेंट आया टू प्रोवाइड यू विद इंश्योरेंस सर्विस, आपने उस पर कुछ पूछ लिया, कोई डाउट पूछा या ये पूछा कि फ्यूचर में सर्विसेज कैसे होंगी, ये वो सब चीजें, उन्होंने कहा सर मैं ही हूं सब। अब उनके पास एक एप्लीकेशन, एक एक्सेस है, जिस एक्सेस की मदद से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है दे कैन शेयर विद यू, जो भी required services in the near future they can provide with to you. So that is why we are calling it as one man office. So it's a vital tool जो promote करेगा life insurance को और ensure करेगा excellent customer service. तो ये initiative जो है it will contribute in the LIC's long term goal of achieving insurance for all. So we are trying to reach developed nation by 2047 and LIC is aiming insurance for all by 2047. So OMO is designed to basically improve the efficiency and productivity of LIC sales force, which includes agents, development officers, senior business associates, chief life insurance advisors, LIC associates and chief organizers. Integrated with Ananda. So what is this Ananda? Remember the full form. It stands for Atmanirbhar Agents New Business Digital Application. So it is Atmanirbhar Agent New Business Digital Application platform which has been developed by LIC, and on this platform this one man office is now integrated, which will help the agents in onboarding the customers, serve the customer all the foundational services, and even in the near future if any information is required आपको एजेंट को कॉल करना है। एजेंट ये नहीं कहेगा सर ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आकर चेक करके बता दूंगा, नहीं सर, वो फोन पे तभी के तभी अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके जो भी आपकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेगा इफ यू आर अ पॉलिसी होल्डर और इफ यू आर आई वुड से अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर द सेम एजेंट। रिमेंबर दैट इट प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक प्रीमियम कैलकुलेट हो सकता है, बेनिफिट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यानी कि आपकी जो क्लियरिंग है ऑफ योर क्लेम अमाउंट दैट शुड बी डन, चेंज ऑफ एड्रेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन लोन रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, आप LIC पॉलिसी को यूज कर सकते हैं एज अ कोलेटरल टू बोरो द लोन, दैट कैन ऑल्सो बी रेज्ड फ्रॉम द सेम, रिन्यूएबल कर सकते हैं अपने प्रीमियम पेमेंट्स का, क्लेम रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें आप अपने एजेंट को देंगे और एजेंट आपके बिहाफ पर वो सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन रेज करेगा कंपनी के पोर्टल पर और वहां से आपकी रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाएगा, सर्विस किया जाएगा। Additionally, it will have a knowledge center, several health and insurance related calculators will be provided, which will provide better services to the customer. So these were some of the important but easy news from the financial world. So from Saturday onwards, we will be back on track and from Saturday onwards, we will be back on track, and in that particular discussion, I hope it's visible now, Akash.
So from Saturday onwards, we will be back on track and we will be discussing many important and many heavy news related to the RBI. So that will be all from my side, guys, in this particular session. Hope the point which we have discussed today is crystal clear. Do not forget to like the session before leaving, और please एक बार इस session को आज share ज़रूर कीजिएगा, because most of the students, they are not still aware that I have joined and I have resumed my finance current affairs sessions. एक बार please उन्हें inform कीजिएगा so that they can watch this session and they can join in our upcoming sessions as well. Thank you so much for joining. We'll catch you in the next session. Bye bye. Good luck. Take care. God bless you all.